everyone, welcome to Polly Psychology. I hope you all are doing good. So, this is the second part of the chapter Learning, and we are continuing the series of Robert Barron book, Robert Barron and Misra. And if you're new to this channel, then please consider subscribing to my channel Polly Psychology. And you can also check the important playlist in my channel, like the class 11th and 12th NCRT psychology I have explained, and this Robert Barron series also. If you're new to this channel, you can start watching it from the first chapter. So let's begin. Now, in our previous video, I had started the chapter by explaining learning, and we had already started with classical conditioning. So now we will continue studying some basic principles of classical conditioning. Classical conditioning क्या होता है? ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है जहाँ पे कि एक स्टिमुलस आता है to remind or to serve as a signal for the occurrence of a second stimulus. So as you might be remembering the Pavlov experiment, where when the bell rings, the food is presented in front of the dog. So they are serving, the bell is serving as the stimulus for the occurrence of a second stimulus, which is food, and that stimulus will in turn create a response in the dog, that is the response in the form of salivation. So I hope you can understand this thing. Classical conditioning में दो तरीके के, दो टाइप के स्टिमुलस होते हैं. सबसे पहला जो स्टिमुलस होता है वो इंडिकेट करता है कि एक और स्टिमुलस आने वाला है, जो कि एक्चुअल स्टिमुलस होता है, जो रेस्पॉन्स क्रिएट करने में काबिलियत रखता है, इन द सेंस कि अभी अगर आप किसी डॉग के सामने एक सिंपल बेल का साउंड क्रिएट करेंगे तो क्या वो सलाइवेट करेगा? नहीं करेगा. वाई? बिकॉज it is associated with absolutely nothing. When will a dog salivate? Only when food is presented in front of it. So in order to create the association, we use the power of this repeated association or classical conditioning effect, which we create in the dog, where after a period of time, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वो डॉग अपने आप में सीख जाता है कि जब बेल होता है उसके कुछ सेकंड्स के बाद फूड प्रेजेंट किया जाता है उसके फ्रंट में, तो वो अपने माइंड में एक एसोसिएशन क्रिएट कर देता है कि साउंड ऑफ द बेल इज़ एसोसिएटेड विद फूड. तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है जहाँ पे कि सिर्फ बेल के साउंड से ही डॉग का सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है. सो दैट इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग. It is the form of a learning which occurs in dogs. So this was all about the classical conditioning. I wanted to recap. So now there are certain principles, some basic principles associated with this type of learning. So the first one is acquisition. Acquisition क्या होता है? ये एक ऐसा process है by which a conditioned stimulus acquires the ability to elicit a conditioned response through repeated pairings of an unconditioned stimulus with the conditioned stimulus. So यहाँ पर ये basically बोल रहा है कि acquisition का जो principle है, ये जितने भी प्रिंसिपल्स अभी आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे एक्विजिशन है, डिले कंडीशनिंग है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द क्लासिकल कंडीशनिंग फॉर्म ऑफ लर्निंग. एंड एक्विजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि कंडीशनड स्टिमुलस एक्वायर कर रहा है वो एबिलिटी टू क्रिएट अ कंडीशनड रिस्पॉन्स. यहाँ पे कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? एक अनकंडीशनड स्टिमुलस वो होता है जो नेचुरली एक रिएक्शन को एलिसिट करता है, एक रिस्पॉन्स को एलिसिट करता है. फॉर एग्जांपल द फूड और द मीट पाउडर विच इज़ द अनकंडीशनड स्टिमुलस, वो एक नेचुरल स्टिमुलस है विच विल डेफिनेटली क्रिएट रिस्पॉन्स इन द डॉग इन द फॉर्म ऑफ सलाइवेशन. सो दैट सलाइवेशन इज़ द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि उसमें कुछ लर्निंग आप उसे सिखा नहीं रहे हो, वो अपने आप से वो चीज़ को करेगा, बिकॉज वो एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन यहाँ पे एक्विजिशन बोला गया है क्योंकि ये एक कंडीशनड स्टिमुलस है. द साउंड ऑफ द बेल बिकम्स द कंडीशनड स्टिमुलस, जहाँ पे वो चीज़ एक्वायर कर रहा है टू एलिसिट अ कंडीशनड रिस्पॉन्स विच इज़ द रिएक्शन टू द रिस्पॉन्स टू द साउंड ऑफ द बेल थ्रू रिपीटेड पेयरिंग्स. यहाँ पे क्या बार बार वन टाइम करोगे, टू टाइम करोगे नहीं, बार बार एसोसिएशन के बाद ही वो डॉग जो है वो बिहेवियर लर्न कर लेगा
of an unconditioned stimulus with the conditioned stimulus. Okay, through repeated pairings of an unconditioned stimulus with the conditioned stimulus. तो यहाँ पे acquisition is nothing but the acquisition of the conditioned stimulus to elicit a conditioned response. So I hope you can understand this one. Now इसमें एक limitation क्या है? After a number of pairings of conditioned stimulus and unconditioned stimulus, acquisition slows down and finally levels off. तो यहाँ पर एक limitation भी है कि बार बार pairings की वजह से acquisition जो है वो स्लो हो सकता है एंड फाइनली लेवल ऑफ भी हो सकता है. सो यहाँ पर कुछ तरीके होते हैं जिसे कि हम टेम्पोरल अरेंजमेंट बोलते हैं. टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस पेयरिंग. सो देर आर 4 kinds. One is the delay conditioning, second is the trace conditioning, third is the stimulus simultaneous conditioning, and fourth is the backward conditioning. Now, delay conditioning is a form of forward conditioning in which the onset of the UCS, I mean the unconditioned stimulus, begins while the CS is still present, and this one is considered as the most effective method. So you need to remember this. Out of all of these 4 conditioning temporal arrangements, this delay conditioning is the most effective one. यहाँ पे क्या होता है कि इसे हम टाइप ऑफ फॉरवर्ड कंडीशनिंग कह सकते हैं. यहाँ पर जो फर्स्ट 3 दिए गए हैं, डिले कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग एंड द साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, ये तीनों के तीनों ही फॉरवर्ड कंडीशनिंग में जाते हैं. एंड ये जो डिले कंडीशनिंग है, यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस का ऑनसेट बिगिन होता है while the CS is still present. I mean when the bell is being rung or there is the onset of bell, साथ साथ में ही विदाउट एनी लेट साथ साथ में ही मीट पाउडर और फूड प्रेजेंट किया जाता है. सेकेंड इज द ट्रेस कंडीशनिंग. ये भी एक फॉरवर्ड कंडीशनिंग है एक्सेप्ट द लास्ट वन विच इज़ अ बैकवर्ड कंडीशनिंग. सो ट्रेस कंडीशनिंग में देर इज़ द ऑनसेट ऑफ द कंडीशनड स्टिमुलस precedes the onset of the UCS and the presentation of the CS and UCS does not overlap. तो ट्रेस कंडीशनिंग में क्या हो रहा है कि कंडीशन स्टिमुलस पहले आता है और उसके बाद precedes the onset of the unconditioned stimulus. डिले में क्या हो रहा है that the conditioned stimulus, the sound of the bell is still present and then the food is being brought. Trace conditioning mein first the sound of the bell will be there and next after a few seconds when there is no conditioned stimulus it will precede, then the onset of UCS will occur. So the presentation it does not overlap like in delay conditioning. Third is the simultaneous conditioning. ये भी forward conditioning का ही एक form है. Now यहाँ पे conditioned stimulus or unconditioned stimulus begin and end at the same time. I mean the sound of the bell and the food will be brought together. So that is why the name simultaneous conditioning. Fourth or the last one is the backward conditioning. Now it is a type of conditioning in which the presentation of the UCS precedes the presentation of the CS. I mean अनकंडीशनड स्टिमुलस को पहले लेकर के आते हैं और बाद में बेल बजाते हैं ना. ये 4 तरीके आप लास्ट में देखोगे कि पहले फूड को लेकर के आए उसके बाद बेल बजाया ना. ये टेम्पोरल अरेंजमेंट और द पेयरिंग्स ऑफ कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस ये क्यों किया गया है? Like just think about it. Why have they done it? In order to find the most effective method और in order to check कि कौन सा सही में एक response create कर रहा है, कौन सा most effective pairing है, कौन सा most effective association है जो कि create कर रहा है the conditioned response to the conditioned stimulus. That's how the learning will occur. Now extinction, what is that? Once conditioning is acquired, how do we get rid of it? Now once you have learned a behavior, now when the dog was put under that environment, that particular kind of an environment, and जब research हुआ, studies हुआ, तो उसने एक type का एक behavior learn किया. Now वो behavior को कैसे वो
ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर से, लाइक हाउ विल इट गेट रिड ऑफ इट? The process through which a conditioned stimulus gradually loses the ability to evoke a conditioned response when it is no longer followed by the UCS. So, how does the extinction occur? जब आप डॉग के सामने साउंड ऑफ द बेल देंगे, दैट इज़ द कंडीशनड स्टिमुलस, एंड उसके बाद वो जो बिहेवियर लर्न किया है डिले कंडीशनिंग में कि साउंड ऑफ द बेल होगा और उसके साथ साथ फूड प्रेजेंट किया जाएगा उसके सामने. ना साउंड ऑफ द बेल हुआ, वो अलर्ट हुआ, लेकिन फूड सामने नहीं आया. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, एंड ऐसा लगातार करते गए कि साउंड ऑफ द बेल दिया लेकिन फूड सामने नहीं आया. हो सकता है कि जब डॉग ने वो बिहेवियर लर्न किया था, साउंड ऑफ द बेल होते ही उसका कुछ दिनों तक सलाइवेशन भी होगा, बिकॉज दैट इज़ द कंडीशनड रिस्पॉन्स. Because he has already acquired that behavior, he has learned that the dog has learned the behavior, so that's why it will create a conditioned response in it. तो जब बार बार हम लोग कंडीशन साउंड ऑफ द बेल करेंगे, कंडीशन स्टिमुलस देंगे और फूड प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे what will happen, the behavior will get extinct. That is why extinction will occur. The acquired conditioning will become extinct. Now next is the reconditioning. What is reconditioning? The rapid recovery of a conditioned response to a conditioned stimulus and unconditional stimulus pairing following extinction is reconditioning. तो reconditioning में वापस से there is the rapid recovery of a conditioned response, which is the salivation to both the stimulus. एक है कंडीशन स्टिमुलस जो कि साउंड ऑफ द बेल है, और अनकंडीशन स्टिमुलस है जो कि फूड है, जो कि नेचुरली एलिसिट करता है रिस्पॉन्स उसको फॉलोइंग एक्सटिंक्शन. तो उसको अगर वापस से आप पेयर अप करोगे तो वो रैपिड रिकवरी हो सकता है, क्योंकि एक्सटिंक्शन के बाद अगर आपने दोबारा से ट्राई किया वो एसोसिएशन क्रिएट करने का विद इन बोथ द स्टिमुलस, तो और अगर बिहेवियर सेम कंडीशन रेस्पॉन्स एलिसिट हुआ तो दैट इज़ रिकंडीशनिंग. या फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो सकता है, रीअपियरेंस ऑफ ए weakened conditioned response to a conditioned stimulus after an interval of time following extinction. Supposing कि डॉग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मीट पाउडर वाला. कुछ टाइम के लिए हमने डॉग का एसोसिएशन क्रिएट करके कंडीशनड response elicit kiya by giving the conditioned stimulus, and the dog learned the behavior to salivate listening to the sound of the bell. Now after sound of the bell, now after that, when you are trying to create the effect of extinction in the dog, or you want the dog to forget that behavior, get rid of that behavior, what will you do? You will present the conditioned stimulus, but that will not be followed by the unconditioned stimulus. I mean, आप बेल का साउंड दोगे लेकिन उसके बाद मीट पाउडर नहीं आएगा. जब नहीं आया तो डॉग will start to get rid of that behavior and extinction will occur. So he will no more salivate. But now suddenly if you again try to pair both the sound of the bell and then you present the food, dog may rapidly recover the conditioned response and start salivating. Now ये हो गया, reconditioning उसका अकर हो गया है, लेकिन अब कुछ वीक्स तक डॉग के साथ वो एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया. उसके बाद क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 2 weeks, okay, for 2 weeks or 15 days you haven't given the stimulus association in front of the dog and you haven't tested. So what will happen is that again, if you try to give that conditioned stimulus like the sound of the bell, there will be reappearance of a weakened response. Like response होगा लेकिन वो weak form में होगा after an interval of time following the extinction, क्योंकि extinction हो गया था और वो behavior dog जो है वो भूल गया था. तो उसके बाद अगर आप कुछ टाइम पीरियड के बाद आप करोगे तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो सकता है. नाउ स्टिमुलस की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. Now what are these two terms? Stimulus discrimination is the process by which organisms learn to respond to certain stimuli but not to others. Okay.
सो एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग कि एक एक तरीके का जो स्टिमुलस है उस चीज़ में ही ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देते हैं एंड नॉट टू एनी अदर काइंड ऑफ म्यूज़िक और एनी अदर काइंड ऑफ साउंड। जैसे डॉग के एग्जाम्पल में हुआ कि वो साउंड ऑफ द बेल में ही सलाइवेट करता था, ये नहीं कि आप उसके सामने एक म्यूज़िक बजाएंगे और वो सलाइवेट करना स्टार्ट कर दे। सो लाइक दिस इज द स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ना स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ स्टिमुली टू tendency of stimuli similar to a conditioned stimulus to evoke a conditioned response. Now same kind of stimuli हो सकता है, like there is the sound of a bell may match to a sound of the honkings, जो horns होते हैं ना vehicles के, तो उस टाइप का है कि मतलब कोई एक स्टिमुलस अगर है सेम काइंड ऑफ है तो ऐसा हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत वो रिस्पॉन्स इवोक करवा सकते हैं या टोटली रिस्पॉन्स इवोक नहीं होगा। सो दैट इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइजेशन, ये ऑर्गेनिजम्स में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। Now next topic is the classical conditioning. What is the neural basis of learning? Now ये हमने देखा कि ये था बिहेवियरल बेसिस ऑफ लर्निंग बेसिकली, जहाँ पे कि हम बिहेवियर स्टडी कर रहे थे कि एक तरीके का हमने कुछ आउटवर्ड स्टिमुलस दिया, उसका रिस्पॉन्स क्या आया, हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे थे। अभी हम देखेंगे कि इसका न्यूरल बेसिस क्या है। नाउ सिस्टमैटिक रिसर्च विद एनिमल्स have resulted in nearly complete identification of the neural circuitry that underlies eye-blink classical conditioning. Essential side to the acquisition and performance of this type of conditioned response is the cerebellum. तो जो main area है which is like extremely essential to acquire such kind of a behavior or learned behavior या फिर आप conditioned response भी कह सकते हैं, acquisition and performance of this type of conditioned response is the cerebellum. और ये cerebellum कहाँ पे होता है? ये हमारा brain structure है that is involved in balance and coordination. This is in our brain, it is a part of the brain that is responsible for balance and coordination of the body. Eye blinking condition involves certain important areas of the brain, that is the hippocampus, amygdala and the brainstem from the cerebellum. Now all of these, they are used to investigate other basic processes including the biological correlates for other certain mental disorder, for example obsessive compulsive disorder. तो ये सारी जो structures हैं, ये cerebellum, amygdala, brainstem, hippocampus, ये सारी structures के बारे में details में study करके हम दूसरे mental disorders के बारे में biological correlates निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ब्रेन के कौन से पार्ट्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इसका हम सिस्टमैटिक रिसर्च करके बता सकते हैं। बिकॉज चाहे जितना भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके कुछ ना कुछ न्यूरल बेसिस होते ही हैं। तो यहाँ पर ये ट्राई किया गया है कि लर्निंग का न्यूरल बेसिस क्या है। सो एज आई टोल्ड यू, here it has been mentioned that cerebellum, the part of the brain, and it is very essential, and the eye blinking conditioning which involves the hippocampus, amygdala and brainstem. So all of these are important parts. Now that's all for this video. I hope you like it. Please don't forget to give a thumbs up and share this video and my channel with your friends who need to understand these topics, and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.